So today we are talking about how to look at the markets differently. But before we go to the topic, I'll just like to explain why we are doing this space today and what triggered it. So uh, in the recent times, we have seen a lot of people giving a lot of outrageous targets like 15,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा or 20,000 हो जाएगा. Like we are seeing uh, let's say HDFC पे 200 हो जाएगा और Reliance पे 5,000 10,000 हो जाएगा. Like it's just too much of random targets out there and लंबा लंबा टारगेट्स फेंकने वाला चीज बस कि फेंको तो बड़ी फेंको वाला सीन है. Now I get some questions and DMs about कि actually हो जाएगा क्या, like what will happen if markets go to like 12,000 or 13,000, or what are the possibilities कि it can go to 12,000 or 21,000 or something like that. So let's talk about that. What's the right way to look at it? Now markets can go to 21,000, markets can go to 14,000 or 12,000. No one knows about it. It's just a game of probabilities. So when you are playing this game of probabilities, you take all the possible outcomes first. Right now what can happen? Either the market can go to, let's say, 21,000, the market can go to 12,000, or the market can not go anywhere. So 15,000 to 18,000, 15,000 to 18,000 का रेंज बन सकता है, राइट. सो यू लुक एट द प्रोबेबिलिटीज कि क्या हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग कि 15,000 होगा, 18,000 होगा, 20,000 होगा, अब मेरे को बुलिश लग रहा है सो अब 18,000 होगा, 21,000 होगा, या अगर बेरिश लग रहा है सो 15,000 होगा, 12,000 होगा. डोंट गो बाय दीज. Have a longer horizon in mind and have a thesis behind it. Look at probabilities कि okay, so एक एक करके केसेस पे लेते हैं. सो राइट नाउ लेट्स से पहले बियर केस लेते हैं. सो वी आर एट 18,000 15 16,000. If the market has to go to, let's say, 12,000, so in that scenario, what would play out for the market to be to go to 12,000? Like what could happen? We can go into a recession. In that case, market would go to 12,000, or the inflation could go really really high and the interest rates could rise, exponentially. Like abhi inflation is, let's say, 8% or 9%. It could go to 12, 14, 15% out, completely out of hand, and central banks raise the interest to like 5%, 6%, 7%, maybe even 7, 8%. So in that case, maybe the markets may go to like 12,000 or something. So have a thesis behind this. Just whenever someone says कि 12,000 होगा, 15,000 होगा, at least ask him कि यार क्या क्या logic क्या है, reasoning क्या है, और in what scenario will it go to 12,000. So if you have a scenario in mind, अभी एक scenario है कि okay, interest rates बढ़ेगा, inflation बढ़ेगा, in that case 12,000 हो सकता है. So you can look at interest rates, you can look at inflation. So if you are monitoring inflation, you know कि all right, inflation is softening, so 12,000 जाने का probabilities is decreasing day by day. Or if inflation continues going down, or commodity or prices going starts going down, look at probabilities instead of just कि 12,000 होगा कि 22,000 होगा. uh, और बेयर केस में क्या है कि लेट्स से क्रिप्टोज टैंक हो रहे हैं. इफ बिटकॉइन फॉल्स और बिटकॉइन ब्रेक्स, इन दैट case there could be a massive liquidation. Some hedge funds can go bankrupt, maybe some companies can go bankrupt, microstrategy types, maybe some countries can go bankrupt like El Salvador and some other countries who are who have adopted the bitcoin or have bought a lot of bitcoins. A lot of rich people can go kind of bankrupt or into a liquidation stage. Even Tesla has like 400 or 500 million dollars worth of bitcoin. So if that bitcoin evaporates, then Tesla could fall substantially. So look at probabilities कि okay, maybe crypto markets अगर और गिरता है इसी टाइप से गिरता है, then we can have a problem, real problem on the लोअर साइड. बड़ा बड़ा सौदा कटेगा, हेज फंड्स बैंकरप्ट होंगे, सबको लिक्विडेट करना पड़ेगा बेसिकली. सो लुक एट प्रोबेबिलिटीज कि ओके, बिटकॉइन अब नीचे जा रहा है क्या. अगर नहीं जा रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इंडियन मार्केट्स का नीचे जाने का. सेम वे इन्फ्लेशन, लुक एट इन्फ्लेशन कि ओके, इन्फ्लेशन ज़्यादा और यहाँ से बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है, इन दैट केस मार्केट्स कुड गो डाउन. और क्यों जा सकता है मार्केट 12,000. सो हैव अ थीसिस इन माइंड कि ओके, रिसेशन होगा तो जाएगा, रिसेशन का कितना चांसेस है. स्टैगफ्लेशन होगा, ओके, स्टैगफ्लेशन का क्या चांसेस है. इट एटलीस्ट वॉट एवर यू कैन स्टडी, वॉट एवर यू कैन डू, एटलीस्ट हैव समथिंग इन माइंड कि ओके, क्या क्या सिनारियो हो सकता है. जाएगा तो कौन सा स्टॉक्स नीचे जाएगा, कौन से सेक्टर्स को सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा. अगर कमोडिटी प्राइसेस का दाम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो किन सेक्टर्स को प्रॉब्लम हो रहा है. एटलीस्ट हैव समथिंग बेसिक इन माइंड.
bull case क्या है यहाँ पे, like FIIs can start buying, that could be a bull case. और our earnings growth can come, that could be a bull case. और क्या हो सकता है, re-rating हो सकता है. re-rating तो यहाँ पे होगा नहीं, we are already extremely overvalued, so re-rating से होगा नहीं. Then what could be the trigger? Maybe corporate earnings could go up, or FIIs can start buying and buying and buying, so that could be a scenario. और क्या हो सकता है, if the global markets go up, then probably we will just go up with them. So at least look at probability scenarios की किस scenario में क्या हो सकता है, range bound होने का क्या scenario है. So if the US and every other basically asset class goes into kind of nowhere, then हम लोग भी चल जा सकते हैं in a time correction. So just look from a probabilities perspective कि okay किसका play होने का क्या scenario है, क्या possibilities है. Then you will have a better clarity in mind कि okay what could happen and what will happen. मतलब instead of just randomly kind of thinking कि okay 12,000 जाएगा, 22,000 जाएगा. मतलब someone wrote कि Reliance could go to 10,000, like the all these sound like a joke. Like Reliance is I guess 15,000 crores market cap or 17,000 crores market cap, and it's at trading at 2,000 rupees right now. So 5 times अगर हो जाएगा, then it would be 70-80 lakh crores of market cap. Like that bonkers. That's completely bonkers. It's मतलब in the near future, it's one shouldn't even think that way. So at least don't just go for random targets, or at least have something in mind ki, okay, if Reliance has to go up, then what could be the businesses that could be performing for Reliance to go up. Telecom करेगा, telecom तो पहले से valued है, और कितना value करेंगे telecom को. Oil and gas है, कुछ नया है, maybe Ajio है, that could go big, or the retail business could go big. Like if you know take these random targets and at least ask the guys who give you these targets कि भाई logic क्या है, और what are you looking at. सिर्फ charts पे line draw करना is not everything. Every Tom, Dick and Harry here is just randomly drawing lines or extrapolating everything. मतलब ऊपर से trend line खींच रहे हैं, नीचे से trend line खींच रहे हैं, और हो गया भाई, हो गया टेक्निकल एनालिसिस, हो गया और टारगेट्स आ गया, और आई डोंट नो मतलब व्हाट काइंड ऑफ बुलशिट ऑल दीस आर. At least means kind of you can say I'm just rambling, but this is what it is. If you are doing, or if you are getting stuck into all these, you are in a big problem, my friend. Don't at least look at probabilities, look at what's happening, and don't look at random targets, don't look at big targets, and have a thesis in mind, have something in mind ki, okay, this could play out in the next 6 months, or this could be what could happen going forward. No one knows the market, but at least you can try to or have something in mind, and you can adjust your thesis with time. But you need to have some ground, have some framework. Otherwise it's all like भूल भुलैया kind of thing. घुस गए, अब पता नहीं बाहर कहाँ से निकलना है. So that would be a limited what do you call it, stance on this. And then how to look at the markets differently. So this is one way of looking at the markets. Then you have different methods. You can do technical analysis, fundamentals, techno funda, all these stuff. Then on technical analysis also, you have a lot of things that you can do. Some people do forecasting, Elliott wave kind of thing. Some people do follow the price patterns. Some people do indicators. Like it completely depends upon people. Like मतलब मेरे वो messages flooded with all these things, and it's just too much kind of request from people. And I just don't understand. We are constantly telling everyone ki yaar take एक direction, take one direction, and just go on that path, explore it, and then look at something else. Just don't hop thoda thoda jaan ke, like you learnt about something today and you are hopping, or system hopping, or method hopping the very next day. That's a problem. Don't do that. At least you know be on something for the time being, and then hop, try different thing. But at least understand, master, or learn, or at least experience, or try one process, one method, one indicator, or whatever you are doing. At least do it for some time. Don't just hop to different things. Same with trading. Means like you want to trade stocks or futures or options. Like if you are trading futures, trade futures. Options, trade options. Don't hop ki aaj future kar rahe, kal cash kar rahe. At least have some expertise in one area. Okay, I didn't realize we have 100 people listening here. Okay. So I have Prashant also as a what do you call it, speaker. Hi Prashant. Hey Ashutosh, how are you doing?
Yeah, I'm doing great. Yeah, how are you doing? Very, very passionate speech so far. Thank you. I just got a little bit, kind of whatever. Yeah. So, would you like to add something? Yeah, sure. I don't know what it means to look at the markets differently because I don't know how most people are looking at the markets. Or It's a you very need difficult. something catchy to, get people in. So, Huh, so, uh, I know how I look at the markets. Right? A lot of different people have different right, methods of analyzing the markets. right, yeah. But I think people get hung up with particular price levels. Oh, 1500, 15,600, 15,800, XYZ levels. But I think people will be better suited to think about price change than actual absolute levels because the price change is what you trade. How the price is moving, what is the path it is taking. Hi, Prashant. I think you are on mute. Maybe you can unmute yourself. Yeah, Oh, yeah, sorry. no problem. Yeah, Somehow it just went on mute. So I don't know where was I. I was saying that a lot of absolute change. Yeah, path. people look at absolute levels of certain markets, and I think that's not as important as the path that the market is taking or the change in price, because eventually that is what you are trading. You're positioning yourself with either in the direction of how the price is changing, or you are positioning yourself against how the price is changing. Each method has its pros and cons, right? Each method has uh, pathways to profitability. It doesn't. There's nothing written in stone anywhere that only trading in the direction of a trend in a market will make you money. There are several and more a lot of ways to make money trading, trying to find ways of trend reversal or reversion of prices towards certain other direction. So both, you I guess you have to identify for yourself what are you more comfortable doing, and eventually what makes money is what keeps you going, right? So if something is not working for you, you mentioned this thing about system hopping or method hopping and so on. I think that's very natural. For somebody who's starting out, or maybe even who's been in the markets a while, you're always going to work on trying different ways, different methods of how to analyze the markets. And I think that's natural. Definitely for somebody who's new, it's very natural to just try out different things because there's so much literature to read about all these different infinite number of ways of how people trade, and somebody starting out really just doesn't know which, how does one choose, how does one decide what is the pathway they want to follow. So it's understandable and it's very natural that you would try out different ways, and because you are also trying to figure out for yourself what works for you. And for example, trend following might not work for you because you might have long periods of drawdown, and that's something that is the nature of trend following. You make money only if you survive those drawdowns, and if you're not somebody who can face and accept drawdowns, then it's not going to work for you no matter what. All sorts of traders will tell you about how great the method is. So it's fine, I think, to experiment with different types of trading. Right, but one needs to at last stick somewhere. Try means नहीं if वो you आता है, it takes time, boss. I mean, I the first trades I set up were all sorts of rubbish trades in the dot com bubble, and I made money for 6 months and I lost all of it in 2 months. So you will make those mistakes if you're starting out. Definitely, you will make those mistakes. You will lose money. Uh, you will be like ये तरीका ठीक नहीं है, वो ठीक है. You will go through that phase, and the thing is that you can't grow if you don't go through that phase, and that's why I'm saying that most people will go through that phase, and it's okay to do that.
Yeah, but I mean later on, yeah, at least once you have done all those, you need to like stick somewhere. Like if you are doing trend following, then you need to just carry through the drawdown so that you can enjoy or reap the benefits when the trend changes. But if you quit while you are in the drawdown, then you are in deep shit, right? Yeah, Prashant. uh, Yeah. So okay, maybe one other point I'll add. I mentioned looking at change in price, right? Instead of looking at absolute price levels, looking at change in price. And I think one of the things that people traders should look at is analyzing. Instead of just these levels, analyzing how price is changing. What is the distribution of price changes in the last 10 days, 20 days, 50 days, 100 days? How are price changes moving across these time frames? And that is the core of what I am interested in the markets is looking at volatility, and that is what so volatility is how price is changing in the last. There are ideas where we look at price changes in on the minute level, or it might be in the hourly level, or in days. So that's something that I find interesting, is to understand how is price change different on these different time scales. So yeah, that's one other thing that I like to add. Right, right. Yeah, makes sense. So ultimately, you are trading the price, you are trading the change, you are trading that move. So if it goes from 15 to 16 or 15 to 14 or 15 to 15 500 back to 15, that's 100 a thousand points in all these three different scenarios. So like if you're trading, then I means if you're trend following, then maybe that 15 to 15 500 back to 15 may be a problem. But if you are not trend following, or if you are not reading that bigger time frames, then I guess like focusing means whatever you are looking at the move would be should be like Prashant. Am I taking this correctly? No, so see, the thing with absolute price levels is that it's difficult to test. It's difficult to know whether it really is significant or not. Because if you think about it, somebody might come and say that Nifty broke down from 15,700. That was the low of last months ago, a few months ago, and so it broke down and then it sold off. And now when it's on its way back up, that's like a resistance, right? So think about this statement that that level is a resistance. How would you, how would you, how would you determine whether that statement has any significance? Whether that statement is true or not? There's just no way for you to determine that. There's no way for you to test something like that, because you- if you look at price changes over the last any number of years, you will find several of such types of levels that have been respected, quote unquote, and then you will find enough instances that have not been respected, quote unquote, right? So that is one of the issues that I think is a problem when you say that this particular level is significant resistance or support or so on. You don't know. You can guess that, oh, when the price comes here, people will start selling. But I mean, I don't know. I don't know if that's the right way to look at it. Right, right. Yeah, makes sense. Makes sense. So, Kay, would you like to add something like how you trade or how you look at the markets, maybe? Uh, Okay, I'm not sure if she's listening, but yeah, let's continue. We'll do a Q&A maybe in like 5 to 10 minutes. You can send the request, and we'll accept. If anyone else would like to join in and talk, then they can. Yeah, okay, hi. Yeah, hi Ashutosh, hi Prashant, hello everyone listening. I would like to add a small thing here, how to look at markets differently. So currently, the general sentiment. Okay, if I talk about sentiment,
about all traders in general is like market कहाँ जाएगा, निफ्टी 12,000 होगा कि 20,000 होगा. Okay, so I think that itself is a very wrong way to look at markets. Okay, being an intraday trader, being a swing trader, even being an investor. Okay, one should always think that अगर निफ्टी 12,000 गया तो मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी. Okay, that should be the question in your mind, and not that 12,000 जाएगा या 20,000 जाएगा. So that is how I look at markets. So then answers, you will get the answer कि 12,000 जाएगा, मैंने अगर लॉन्ग किया है 16,000 पे, तो what should be my strategy? Okay, मुझे exit करना है, मुझे average करना है. I'm not getting into whether averaging is right or wrong or anything like that. I'm just saying that what should be your question? Okay, how you should look at markets. These days every other person is asking every other person कि कहाँ जाएगा market. भाई मार्केट जहां जाएगा वहां जाएगा, तुम क्या करोगे, पैसे तुम्हारे लग. So yeah, that is all that I would want to add. Completely makes sense, and you are absolutely spot on. Means जाएगा तो जाएगा ठीक है, but what are you going to do in that scenario? That's a good question. Means everyone should ask this question Yeah, to I think yourself. I've all of us have found ourselves in these situations, right? कि market यहाँ जाएगा, मैंने ये करना था, but eventually you're like ये क्या हो गया? Why did I do this? I was not supposed to do this. So Right, yeah, ये करना था but कर नहीं पाए. That regret. Like 2022 crash, 2020 crash में सबको खरीदना था but कोई खरीद नहीं पाए. no, So that, I'll tell you, when COVID was happening, and that first circuit happened, and that the reversal happened a couple of days after, right? And I was like, boss, abhi, this is a good time to buy. And then market again sold off, and I was like, okay, now is a good time to buy. Abhi thoda sa rukte hain. And I was like, यहाँ तो buy करना था. But then within like 2 weeks, the market was like up, way up there, right? And it was like, ये क्या हो गया? Why did I not buy that? I was supposed to buy, but I didn't. Why not? So you think about these things, right? कि हाँ market यहाँ पे गिरेगा तो you will do this, but eventually when that does happen, you're not able to make a decision कि अरे ये क्या हुआ? And then you realize only after it's too late. yep. So I have got a question request. So I've added VIN win. Uh, yeah, when you can ask a question. Anyone else, if you would like to ask a question, you can simply request and we'll get you up here. Anyone else would like to speak, talk? It's an open forum now, so you can speak freely. When your turn. I'm not. You're not audible. Okay, I'm not sure what's the issue, but you're not audible. Hello. Yeah, am I audible? Yeah, Shrikant. Yeah, you are. Yeah. The thing is um, I am into market for the last 4 or 5 years, but still not profitable. Like it's like break even. I will earn for some weeks and I will lose it all. It is going like that only. But after watching so many YouTubes and watching some books, what I understood may be wrong. But my question is it correct or not? That's my question. So I will ask my question. So the people who is successful or are getting money from stock market, the person's strategy would be like when they lose a small, and they know what they are going to lose or what they are going to risk. And when they are correct, they make like 3 times whatever they are risking, or 5 times what they are risking, or 6 times what they are risking. I think that's what separate successful traders from other people.
because I used to trade many times, scalping and all, getting like 1,000, 2,000, 3,000 every day, every day, every day, and one day I will lose it all. So I would like to get an advice from experts. Is it that separates, or is it there is another way also? Kay, would you like to take that? Okay, I'm not sure if another issue. Okay, Prashant, Vishal, anyone? Yeah, sure, Ashutosh. Yeah. So first of all, I just want to say that anything you hear on public forums like these, there are a lot of self-proclaimed experts, right? But just be careful in putting to use what you hear. It's just somebody's opinion, including mine. Right? It's just my opinion. Uh, but here's, I think, how you should look at it. What you need to do is think about what are the set of rules that resulted in all your small winners, and when those large losers happened, were you still following those small rules, or uh, were you still following those rules, or were you changing your rules on yourself? Okay, because there is no one right way. Everybody wants small losers and large winners. Everybody wants it. Nobody will say otherwise, right? But not all types of trading ideas and systems will lead to that kind of return profile. So, if you look at any particular type of trading system, or setting a set of trading rules over, say, 100 trades or 1,000 trades. For example, let's take the example of trend following, breakout trades, trend following. These kind of trades will have some very large number of large winners, but the number of those large winners is not going to be that large. Okay, you might have out of 1,000 trades about maybe 400 or 450 winners. Let's say 400 winners. So 600 losers will be there. They might all be small, but out of those 400 winners, there will probably be 300 of those winners will only pay for the losses of those 600. Now, what are you left with? Those 300 winners gains is equal to the loss of all those other 600 losers. You're left with those last 100 trades out of 1,000. That is 1 out of 10 trades, which is going to give you the entire profitability of your trading idea or trading set of rules or trading system. So now think about it. In order for you to survive and make money over the long term for a system like this that has small losers and large winners, you need to take each and every of those trades. 1 out of 10 trades is going to make the entire profits of the entire system. That's a big deal, because think about it. If you are doing this with discretion, or looking at a chart or making a decision by yourself, do you have the ability to make each and every decision correctly? Do you have the ability to take all those trades uh, to the T, without any dilemma in your mind, without any questions popping in your mind when the trade comes? Because out of those 10 trades, out of those 100 trades, only 10 of them, or out of 10 trades, only one of them is going to give all your PNL for the whole year, right? So it's not an easy task. It's not an easy task to run a system where you have small winners and small number of small size of losers and large winners. It's not easy, right? Now, on the flip side, you talked about what you are doing, where you had a large number of small winners, small winners. Now, it's possible that the ideas you were using were okay, where the losers you would face would not be very large. They might not be very large, but when those losers happened, you somehow changed your rules on what you were doing, and that ended up in creating those large losers. So put it this way, that if you have a system that has 2/3 number of winners,
So say 67% of your trades are winners and only 33% losers, right? Now you have to figure out whether that system, those 33 losers, eventually are going to overpower all the winners that you have. If there are not very large losers in that 33%, then you're fine. You're fine to trade this kind of system, which gives you a larger number of win rate, right? And this type of a system is called a negatively skewed system. The first type of system that I spoke about is called a positively skewed system. What it means is that you have a skew towards large winners versus on the other side, you have a skew towards large losers. So either way can make you money. You just have to figure out whether which of these you can do consistently, because that is what matters over the long run. I don't know, it's a long answer, but I hope I got my point across. Yeah, I got your point. The thing is, I have created my journal. I am nearly doing what I'm doing is like option selling. So in that one, the biggest losers happens. Like it's like it is not by breaking the rules. It happens when there is a big gap up which is out of our control, or any black swan event, or like the sudden jittery moment which happens in the last expiry day. Like that moments comes, then it is out of control. So I have kept like 1% of like stop loss, 1% of my portfolio as my maximum stop loss. But while we are executing that one, it becomes 2%. See, so yeah, within a split of seconds, like within 5-10 seconds, 1% become 2%. So like these things happens sometimes in 2-3 months. So this one wipes our capital, or it takes like 1 month or 2 months profit, or sometimes like that. That's what Yeah, happens. all I can add is that, see, if I understand what you're talking about, but if that method is not suiting you, if you are having sleepless nights about it, concerned that a gap up tomorrow or a gap down tomorrow is going to hurt your account too much, then I would just say it's not worth it. Because I mean, nothing is worth not being able to sleep at night. The whole reason you are trying to make money in the markets is so that you have a peaceful night of sleep, right? So if it's not allowing you to sleep peacefully, then just don't do it. Find a different way to make money in the markets. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Right. Yeah, chalo, hope that answers. Yeah, Vishal bhai, over to you now. How do you look at the Thanks, markets, and if you would thanks, like to add Ashu. something on this point? Yeah, So hi. I just thanks Ashu, thanks K, and I just wanted to add on to what Prashant was talking about. So the key over here is to manage your risk. Now, whatever your system is, let's do a math round. I'll just give you a math. The best of the traders in the world are profitable only probably 20 to 30% of the times. I mean, assuming if someone is only profitable 30% of the times, so which means 7 out of 10 trades which you take are loss making trades. Only 3 trades are profitable trades. Now you have to define what is the percentage of risk you are ready to take on a loss making trade. Assuming that you are only losing 1% on the loss making trade, then you are making anywhere between 5 to 7% on the three profitable trades. So typically, what you are doing is you are losing only 7% of your capital on 7 loss making trades. But on the flip side, on the 3 positive trades, what you have done, you have made almost 15%. So net you are still 8% up. So your winners should be big, your losers should be small. Now, coming to the point of gentleman who was talking about selling options, and he keeps 1% capital, and off and on there one of these expiries keep coming where the entire profits are wiped off, or capital is goes for a toss. I mean, you have to size your position accordingly. If you are not able to size your position, and you are looking at a cheaper option, 5 rupee, 10 rupee, 25 rupee option, you're going and selling.
I mean, all I can say is God bless you and all the best is all I can tell you guys. Because option selling is not a game where, as long as you are not having a capital upwards of 1 crore, people coming, sorry to say, but people coming with 5 lakh, 10 lakh rupees of capital think they are masters of option selling. आई मीन सॉरी 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने किसी को ऑप्शन बेच के बड़ा पैसा कमाते हुए नहीं देखा है हाँ लेकिन ऑप्शन बेच के बड़े बड़े लोग साफ जरूर हुए हैं so I mean you have to because you don't know I mean you there is a black sun event you go naked long naked short overnight naked shorts overnight and there is a black sun event so you are gone for a toss I mean biggest of the traders we know have in recent times also have gone lost crazily. So please be very cautious when you are going or selling options, naked options overnight. Ideally, you should not be a small trader with less than 50 lakhs of capital. Should not be doing this. Is what I would advise. That's it, Ashok. Cool, cool. Yeah, thanks. Okay, you were trying to speak something. Okay. So I got a question in my DMs. The question is, कुछ suggestion दो please. TA and FA learn करने के लिए. Okay. So any recommendation on how one should approach and start learning. My take would be maybe before reading or doing books and all those stuff, maybe follow some Twitter handles, good bad no one knows, but at least follow some people, follow some news handles, follow some macro guys, micro guys. हर सेगमेंट से कुछ कुछ लोगों को फॉलो कर लो ट्रेडिंग से, जिसका मेथड अच्छा लग रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है एक बार फॉलो कर दो. देन ट्राई टू डिग डीपर इनटू हिज अकाउंट. आप पिछले 5 साल का 10 साल का जाके उनका ट्वीट्स पढ़ो एंड ट्राई टू सी कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. 3-4 लोगों को करो, 3-4 टाइप के ट्रेडर्स का करो. कोई इंट्राडे होगा, कोई शॉर्ट टर्म होगा, कोई कैश कर रहा होगा, सबका जाके चेक कर लो एक बार अकाउंट एंड सी इफ यू वांट टू डू दैट स्टफ एंड इफ दैट मेक सेंस टू यू. जिसका सेंस लगता है फिर उस प्रोसेस में जाके यू रीड मोर मे बी बुक्स. फिर देखो उन्हीं के टाइमलाइन पे मिल जाएगा कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए या क्या रिसोर्सेज चेक करना चाहिए. सो maybe read those books and start somewhere and धीरे धीरे you will automatically build it up and compound होगा वो. So yeah okay. Yeah, I would like to add. See, if you are making losses, I lost the connection in between. ये वही चल रहा है ना question, big loss, small profit वाला. Sorry. We have Oh, moved like 5-10 minutes ahead. oh, okay. But yeah, I'm you so can speak on sorry. that. Acha, okay. I'll just add my 2 cents. I don't know why I keep losing the Yeah. connection. Okay. So yeah, I just wanted to add कि see if you are not making consistent profit तो एक ही चीज तुम्हारी गलत हो सकती है. Either the execution or your strategy. Okay. So ऐसा नहीं है कि because you are selling options you are not making money. So if you're comfortable in selling options, you can continue doing that, but you keep a space to change it. जैसे अगर overnight options कर रहे हो तो obviously there is a risk of gap up gap down. Maybe try shifting to doing intraday जो पूरी जनता कर रही है. 9:20 को बेचो, 3 बजे खरीद लो करके. ठीक है. So try changing the strategy. If strategy is working really good, then maybe there is some problem with your execution. Execution में क्या problem आ रही है? You check that. Okay. Like you mentioned that you are already maintaining a journal, so maybe you can have a trading friend who can assess your journal and guide you ki where you are going wrong. Okay. And another thing is just check your quantity. If you end up losing your capital in one go, then obviously you will be left with no more chances in the market, right? Then फिर तो strategy बदलने का, execution improve करने का कोई chance ही नहीं है. So yeah, that's it from my side. Thanks. अरे Yeah, Vishal. as book recommendation, boss, all the math you need to work in the markets is available in 10th standard, 11th standard, 12th standard statistics. Just go and revisit statistics from high school, and you will be highly armed to go and analyze the markets.
CFA FRM वाले आ जाएंगे आपके पीछे। कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। अपने नाम पे बैच लगाना है तो वो अलग बात है, बट just go and read up statistics from high school. Do that all over again, and I'm sure you'll have a better understanding of how to approach the markets. Makes sense. Yeah, Vishal. No, Ashu. So on the fundamental side, there was a question कि fundamental analysis कैसे करना चाहिए या कैसे क्या नहीं करना चाहिए. I have a simple question. You have to buy a appliance in your home. आप 4 जगह रिसर्च करते हो, विजय सेल्स जाते हो, रिलायंस रिटेल जाते हो. You go and do multiple research. या probably you look at Amazons and Flipkarts of the world, and eventually you end up taking a decision. So you are spending time and energy and wasting time and doing that, doing your own research before you finally decide to buy a product. What makes you not do that when you are buying a stock? Just because probably Vishal has said or Prashant has said or Kirit Bhai says कि ये ले लो या ये बेच दो, you just go ahead and do execute the trade. Why? Because हम लोग market के अंदर 15-20 साल से हैं, इसलिए. Why can't you do your own research? How many people over here will go and visit a website of the company? I would say 95% of the people who are entering a trade, they don't even know what business the company is into. And then the end of the day वो बाजार को गाली देते हैं आके, यार बाजार खराब था, मैंने ऊपर में ले लिया. So please do your own research. At least यार आपका खुद का पैसा है, स्टॉक लेने से पहले डोंट गेट इनटू अ फोमो. कंपनी का वेबसाइट पे चले जाओ, फिगर आउट करो वो क्या धंधे में है. कोई कंपनी का भी आईपीओ आ रहा है, आई मीन मैं पीछे देखा था, आया था कांदिवली में किसी गाला नंबर 10 के अंदर कंपनी बैठी हुई है, उसका आईपीओ लेके आ रहे हैं. आई मीन यू कैन यू कैन गो एंड विजिट द, कोई कांदिवली में बैठा होगा, वो जाके चेक कर लेगा वहां पे कि वो कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती. सो यू हैव टू स्पेंड टाइम बिफोर just when you are doing investments. Don't just go by word of mouth, क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ में तो वो लास्ट लेग ऑफ रैली के अंदर आप लोग के पास में वो स्टॉक्स आते हैं जहाँ स्मार्ट मनी इज नॉर्मली एग्जिटिंग. That's it, Ashu. I would request if you can send a request to Kirit Bhai and DJ Kara. Yeah, I've already sent a request to Kirit bhai. Yeah, Manish, you can ask a question. Yeah. या हेलो एवरीवन. सर जैसा विशाल सर ने कहा है अभी कि इन्होंने मतलब ऑप्शन सेलर को पैसा बनाते हुए नहीं देखा है काफी टाइम, 25 लाख 50 लाख. तो सर मतलब 5 लाख 10 लाख वालों के लिए फिर ऑप्शन बाइंग हो या सेलिंग हो, मतलब कोई होप नहीं है मतलब ट्रेडिंग में करियर बनाने के. भाई ऐसा नहीं है, देखो सबसे पहले विशाल भाई ने बोला है एज अ जनरल रूल ऑफ थंब, you could very well be the exception, but again, do you think you are an exception? नहीं, बट सर ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही रियलाइज होंगी ना चीजें. हाँ तो फिर आप ट्राई कर लो ओपन नहीं मार्केट. मतलब नहीं सर, मेरा मतलब है ट्राई तो मैं. हाँ आशुतोष, allow me to answer. मनीष जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं. जी आपके पास में 5 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है है. ना? आप कितना निफ्टी करेंगे? आप क्या करते होंगे? एमआईएस प्रोडक्ट में चले जाते होंगे, इंट्राडे में निफ्टी को ज्यादा खेलते होंगे. आइडियली इफ समवन हैज गॉट निफ्टी का नहीं, मार्केट, निफ्टी ऑप्शन बाइंग. हाँ ऑप्शन सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ. ऑप्शन सेलिंग में 50 निफ्टी का मार्जिन हो गया 1.25 लाख रुपए का. तो किसी के नहीं पास में सर, मैं वही कह रहा हूँ. आपने कहा कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऑप्शन बाइंग में अगर मेरे पे 5 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है तो ऑप्शन बाइंग तो उससे भी मुश्किल है, टफ है. तो इसमें पैसा बनना मतलब. For me, option buying is more of a momentum trade than anything else. I don't do index options. Anyways, I don't trade only bank nifty. Index में nifty में मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ, but I don't do index options. I am a purely stock guy. और stock में options में जब momentum आता है तो I trade momentum in options. तो आप अगर full time trader हो, आप स्क्रीन पे बैठे हो, आपको कोई DLF के अंदर मोमेंटम दिख रहा है, एट द मनी की ऑप्शन लो, मोमेंटम खत्म हो, आप एग्जिट करो. If you buy and the option and sit on the option, you marry that option, then आपका वो option erode ही होगा सर. आपको मतलब वो नहीं, वो परफेक्ट है सर. वो मैं इस बात से तो मतलब मेरा जो मोमेंटम स्टाइल ही है, मेरा भी स्कैल्पिंग टाइप स्टाइल है कि मैं भी 15 मिनट हाफ आवर का ही ट्रेड लेता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लेता. बट मैं सर वो बिलीफ सिस्टम की बात करना चाह रहा था. यहाँ पे जो बिलीफ सिस्टम है कि यार
मतलब पैसा तो ऑप्शन सेलर भी, मतलब आंख बंद करके तो किसी भी चीज में पैसा नहीं बनेगा ना सर, सेलर हो चाहे एक बायर हो। सेकंड मनीष भाई, एक मिनट मनीष भाई, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं पहले भी कई बार बोला हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्लीज जी एकदम ये चीज दिमाग में क्लियर कर लो कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों बराबर है। दोनों में से हाँ कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टफ नहीं है, इजी नहीं है, या किसी में ज्यादा पैसा नहीं बनता है, किसी में ज्यादा पैसा बनता है, ऐसा कभी नहीं है, नहीं होगा। हम्म, ओके, नहीं तो कोई ठीक है, ऑप्शन बेचेगा नहीं, कोई ऑप्शन खरीदेगा नहीं। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, आप बेच रहे हो तो कोई खरीद रहा है, आप खरीद रहे हो तो कोई बेच रहा है, देयर इज ऑलवेज अ काउंटर पार्टी। यस सर, यही एक्चुअली सर, बस वही डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार मतलब अगर आप 20 साल से हैं मार्केट में, मतलब आई एम नॉट कि मैं पर्टिकुलरली सर को बोल रहा हूँ, सर का इंटेंशन ये नहीं है। सर ये कह रहे हैं कि आंख बंद करके 5 रुपए 10 रुपए का ऑप्शन आप बेच रहे हो, तो फिर वो आप पैसा बनाते हो, मैंने देखा नहीं किसी को। हाँ तो तो वो चीज जो वो कर तो, रहा है, हाँ वो अरे वो तो परफेक्ट है वो। गैम्बलिंग हो गया, वो तो वही हाँ वो बोल तो रहे ना। परफेक्ट है। हाँ, बट ये है ना कि यार मतलब बड़े कैपिटल है आपके पास तभी आप नहीं पैसा देखो बना उसका सकते रीजन, हो एक सेकंड रुको मनीष हाँ भाई, रुको एक मिनट, मैं उसका रीजन बताता हूँ। देखो, जो हम्म, विशाल का कहने का मतलब है ना, अगर लेट से आपके पास में 10 लाख रुपए, हायर साइड ही लेते हैं, ठीक ओके, है। आप 10 लाख में कितना लॉट ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो? 7 8 लॉट एकदम, आप पूरे कैपिटल लगा दो तो भी उसके आगे तो नहीं हाँ आएगा। बिल्कुल। राइट, 8 लॉट कितना कितना क्वांटिटी होगा, आप बताओ। वही सर, निफ्टी में 50 के हिसाब से आप कितना, सर बताओ। मेरा पॉइंट, हाँ नहीं 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 मतलब पॉइंट, मैं, हाँ नहीं नहीं पॉइंट ये हो रहा है कि कितना कितना क्वांटिटी होगा। 8 लॉट के हिसाब से 400 क्वांटिटी हो गया ना। ठीक है, आप उसमें कितने कमा सकते हो? 20 रुपए 30 रुपए, अगर आप एक स्ट्राइक ओटीएम लोगे या एटीएम पे सर जाओगे अगेन 20। सर, मैं आप रिस्क रिस्क एपेटाइट और नहीं नहीं पोजीशन साइजिंग की नहीं नहीं बात मैं इतना, समझ गया नहीं हूँ। नहीं देख, एक सेकंड, सर हम सर लोग नहीं नहीं, हम लोग उस पर जा नहीं रहे। सर मेरा विशाल सर से ये बस ये बिलीफ सिस्टम को लेकर सवाल था बस, और कुछ नहीं अरे था मैं सर, वही वो आपको, अरे बिलीफ। मैं हाँ वही आपको आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, उनका कहने का आप एक बार ये समझो कि अगर आप एकदम मैक्सिमम क्वांटिटी भी ट्रेड करते हो जितना अलाउड है लीगली, हम्म, आप उस पे भी कितने कमा लोगे? ओके, 400 क्वांटिटी पे आप 20 रुपए 30 रुपए कमा रहे हो तो कितना होगा? 5,000 7,000 10,000। ठीक है। ठीक है, आप कितने, और ये मेल्ट होने में कितना टाइम लगेगा? एक दिन 2 दिन। ओके, एग्जैक्टली। आप बात समझ रहे हो? अगर आप ये भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नेकेड वन साइड करो, अगर आप स्ट्रैंगल स्ट्रैडल में चल जाओगे तो आप 4 ही लॉट कर पाओगे, 4 लॉट 5 लॉट। ठीक है। ठीक है, सो आप कितने कमाओगे? अब ये कमाने के पीछे लोग का फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर आप 2,000 4,000 कर रहे हो, एक दिन नुकसान एक दिन प्रॉफिट, आप महीने भर में कितना कमा लोगे? हम्म, ठीक है, सो वहां मतलब पे प्रॉब्लम स्टार्ट ठीक है। होता है। ठीक है, इसीलिए वो बोल रहे हैं आठ, कि इतने हाँ छोटे कैपिटल पे आप ये करते रहोगे तो आप फ्रस्ट्रेशन में आके किसी दिन कुछ उल्टा पुल्टा ट्रेड मारोगे, और जिस दिन मारोगे उस दिन फंसोगे। ओके, सिर्फ परफेक्ट। एक ट्रेड चाहिए आपको बैंकरप्ट करने के लिए ऑप्शंस में। बाइंग में तो एटलीस्ट ठीक है कि जितने का खरीदा उतना जाएगा, और राइटिंग में तो आपका पूरा गया। आप एक ट्रेड फंस नहीं जाओगे, आप सर, कुछ नहीं कर पाओगे फिर। सर बिल्कुल सर, मैं बस अपना थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं एक्चुअली मैं क्या करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पे अभी जो भी कैपिटल है उसका मैं सर मैक्सिमम 20% अकाउंट में रखता हूँ, ज्यादा नहीं रखता, ठीक है ना। मैं ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ बेसिकली। हालांकि मेरे को हो गया है काफी 3 4 साल हो गया है मार्केट में, तो मैं उसमें ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ। ऑप्शन बाइंग में मेरा यही है कि सर मैं 20% कैपिटल अपने अकाउंट में रखता हूँ, तो अगर बिल्कुल 20% भी अगर बिल्कुल ही खराब दिन हुआ तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन हाँ मतलब मेरा टारगेट ये होता है कि एक सैलरी मेरे को निकालनी है महीने की। हालांकि अभी भी कंसिस्टेंट बेस पे रिटर्न नहीं आ रहे, मतलब एक महीना आता है एक महीना नहीं आता, एक महीना आता है एक महीना नहीं आता। तो मेरा उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न निकालना है, जो मेरे को लगता है कि हो सकता है, जस्ट बिकॉज अगर थोड़ा सा साइकोलॉजी पे मैं काम कर लूँ, और मैं कर रहा हूँ। बट मेरे को बस ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है पैसा बनाना। अगर ऐसी कोई चीजें आ जाती है ना, वो फिर थोड़ा सा हिला देती है सिस्टम को पूरा। बस यही मेरा एक डाउट था सर। चलिए ठीक है, हाँ अब ये आपका बिलीफ सिस्टम का है, अब क्या बोले इस पे। हाँ। राइट। बाकी ये विशाल सर ने जो बात कही है वो काफी हद तक ठीक है कि आंख बंद करके तो आप कुछ ही चीज में पैसा नहीं बना सकते। लेकिन ये है कि अगर सिस्टम अगर आपका है और आप थोड़ा सीख रहे हैं, साइकोलॉजी वाइज आप सीख रहे हैं, तो आप बना भी सकते हैं, छोटे पैसे से बड़ा पैसा भी बना सकते हैं। सर सही देखो है सर। इसमें, मैं इसमें एक ही हाँ चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने एक चीज बोली कि आपका एक फिक्स टारगेट है हर महीने बाजार से इतना पैसा निकालना है। सर एग्जैक्टली। मेरा सवाल है कि बाजार को आपको पैसा चुकाना है क्या? डज मार्केट ओ यू मनी? नो राइट। या
तो भाई नहीं, नो। बाजार ने आपको उधार दिया हुआ है कि वो आपको हर महीने जो है वो ईएमआई निकाल के देने वाला है? नहीं, बट सर कुछ तो अगर मार्केट में टाइम दे रहे हैं तो एटलीस्ट 1% आप निकालना। हाँ। 1% निकालने के चक्कर में आप कितना परसेंट रिस्क पे डाल रहे हो? आपने कभी वो चीज को सोचा? अभी आपने बातों बातों में कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आपने वो 20% रखा हुआ है, 20% भी कब कोई खराब दिन हुआ तो वो उड़ जाएगा। सो माई पॉइंट ओवर हियर इज वेरी सिंपल। डोंट थिंक कि आपको बाजार से क्या मिलेगा। आप जब ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हो, द बिगेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हु हैव बीन सक्सेसफुल ट्रेडर्स हु हैव बीन इनटू द मार्केट, they only know one thing when they enter the trade, how much they are ready to, how much they, that is it, nothing else. तो अगर आपको आपका डिफाइंड लॉस पता है, यू नो व्हाट इज योर डिफाइंड रिस्क, then I think you will be successful. If you keep trading in the market with the mindset कि मेरे को लाख रुपए कमाना है हर महीने बाजार से, या 50,000 कमाना है या 5 लाख कमाना है, आपके दिमाग का माइंडसेट वही रहेगा। सर बाजार ने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि आपको हर महीने, मतलब मेरे वर्ड्स आपको खराब लगेंगे, हार्श लगेंगे, बट दैट इज अ फैक्ट। मार्केट डजंट ओwe एनीवन एनी मनी। नहीं सर, वो रियलिटी बोल रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, वो मैं उस चीज के लिए कोई दिक्कत So I नहीं। mean, people आप have बोल to सर। change their mindset. They have to get their define their risk. If they know okay, what maximum is their downside, which they are ready to lose in a month. भाई मैं आपसे आप बोलो कि मैं हर महीने अपने कैपिटल का 2% खोने को तैयार हूँ, तो बाय एंड ऑफ द ईयर इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर 12 के 12 महीने लॉस मेकिंग रहोगे, right? But what is the guarantee that you will be profitable all 12 month, 12 के 12 महीने आपको 1 लाख रुपए का अगर आपने टारगेट किया, इज देयर अ गारंटी दैट 12 महीने में आपको 12 लाख रुपए बाजार आपको से आप निकाल लोगे? नो, राइट? देयर इज नो गारंटी। बट इफ यू हैव योर डिफाइंड रिस्क, यू नो कि इससे ज्यादा मैं खो नहीं सकता हूँ, यू हैव टू पुट योर स्टॉप लॉस। इट इज कॉल्ड अ स्टॉप ऑफ इरोजन ऑफ योर कैपिटल। इट इज नॉट स्टॉप लॉस। लॉस के नाम से लोग डरते हैं, हम उसको कहते हैं स्टॉप ऑफ इरोजन ऑफ कैपिटल। यू हैव टू स्टॉप, कहीं पे आपको मुद्दल को घटने से रोकना पड़ेगा। तो आप जब ट्रेड के अंदर घुस रहे हो, अगर आपको पता है कि ये सौदे में मैं इससे ज्यादा नहीं खो सकता हूँ, you will automatically start becoming profitable over a longer period of time. And what matters is end of the day whether you are able to make money consistently on a longer period of time or not. That is it. मतलब आप सोचो कि 2 महीने आपने कमा लिया, तीसरे महीने गवा दिया, चौथे महीने फिर कमा लिया, फिर 5वें महीने वो थर्सडे आया एक्सपायरी का जिसमें ऑप्शन बेची थी, और जैसे ये लास्ट एक्सपायरी में हुआ, गांव दुनिया को नुकसान। बिल्कुल। तो वो मतलब यू आर जस्ट देन प्लेइंग अ कैसीनो, वो फिर सट्टा है। आई मीन आई डोंट, आई नो लॉट ऑफ। सर मेरा 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 सर लास्ट यही मतलब एंड करते हैं, आप जो कह रहे हो यही कन्वर्सेशन में यही है सर, कि इफ सपोज किसी के पास, जो मैंने अगेन वही बोला, 5 लाख से 10 लाख का कैपिटल है, तो क्या वो इस कैपिटल से 50 लाख 1 करोड़ आने वाले 3 साल 5 साल का अगर टाइम पीरियड दे तो पहुंच सकता है या नहीं? इम्पॉसिबल हो अरे भाई मतलब। जस्ट सेकंड यार, इंटरप्टिंग यू भाई, नो वन नोज। अगर आपको होप चाहिए तो कोई कुछ भी बोल देगा, बट ऑनेस्टली नो वन हियर हैज अ क्लू। आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, लाइक आप क्या चाहते हो, हम क्या बोले आपको, आप बताओ। सर बिलीफ सिस्टम की बात है सर बस में। अरे बिलीफ सर सिस्टम क्या होता है? मेरा अपना बिलीफ आंसर ये सिस्टम है। बनाओ ना यार। बोरोड बिलीफ सिस्टम थोड़ी होता है। आप आई मेरे से थिंक बोरो कर लेट लोगे क्या? किरीट जी और डीजे नहीं नहीं आंसर। सर, फिर मतलब एक्चुअली हम ये जो ट्रेडिंग हेलो। मीटिंग कर रहे हैं, स्पेस मीटिंग कर रहे हैं, वो एक्चुअली सीखने के लिए कर रहे हैं ना सर। या मनीष हाँ तो किरीट फिर जी सर। बोरो नहीं करते ना आशु बिलीफ सिस्टम। हेलो। आशु किरीट नहीं सर नहीं नहीं, बोलिए। आप सर, आप अगर सामने आप अगर एक मनीष जी, आप अगर 1 लाख से 1 करोड़ बनाना चाहते हैं जी तो आप सोचिए, आप 10 लाख से शुरू करिए ना। हाँ, 10 लाख से 10 चलो मेरे पास 10 लाख से 10 करोड़ बनेगा। आप 10 करोड़ को फिर आप अनदर 100 टाइम मल्टीप्लाई करिए। आप ठीक है। कितने कितने जल्दी आप इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे, ये सोचिए। तो अगर ये पॉसिबल होता, आप अपना खुद ही का क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिए कि अगर पॉसिबल होता नहीं तो सर, फिर तो हम ट्रेडिंग में कितना फिर किस टाइम पर्पस के आपको लिए आए 1 लाख से कितना टाइम लगता है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन होने में, ये आप देख लीजिए। सर? मैं वही पूछ रहा हूँ सर, फिर हम ट्रेडिंग में जो मतलब मनीष जी, ऑन अ लाइटर नोट, 1 लाख के कैपिटल के ऊपर आप 1 करोड़ जरूर कमा सकते हो, लेकिन वो ट्विटर के ऊपर फर्जी स्क्रीनशॉट डाल डाल के आप जरूर कमा सकते हो। दैट इज इट। नहीं, तो सर ट्रेडिंग से मतलब वही लोग पैसा कमा सकते हैं जिनके पास 50 लाख है या 1 करोड़ है, उससे कम वालों। या आशुतोष भाई, कैन आई chip in a word or two? yes किरीट भाई, किरीट yeah, भाई, you योर can. वॉइस इज नॉट क्लियर। Okay, am I audible now? Am I clear? Yes, it's good, yeah, it's यस सर, better. परफेक्टली ऑडिबल।
मनीष जी जो मैं बातें कहूंगा शायद आपको पसंद नहीं आएंगी, बट हाँ नहीं सर, मैं बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर सुन रहा हूँ तो आपकी 2 बात। मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैंने बिल्कुल पूरा बिल्कुल सर, स्पेस बोलिए। सुना पिछले 20 मिनट में। आपका पहला ये ठीक है, था कि मेरा टारगेट ये है कि मैं 1 महीने की सैलरी बनाऊं, करेक्ट ना? ठीक अगर है, हम गलत बोले तो हमें परफेक्ट करेक्ट परफेक्ट, करिए। बिल्कुल ठीक है। बाजार को आपकी उधारी चुकानी, नहीं चुकानी सर, बिल्कुल नहीं चुकानी, बट आप अगर मार्केट में आते हो तो सर कोई ना कोई गोल तो होता है ना सर आपका। 1 मिनट। अगर विराट कोहली पहले T20 में सेंचुरी स्कोर करता है, पब्लिक की क्या उम्मीद होती है? नेक्स्ट 5 T20 में सेंचुरी स्कोर करेगा, करेगा कि नहीं? सर पब्लिक की उम्मीद नहीं होती, लेकिन विराट कोहली की तो उम्मीद होती है नहीं ना कि होती। मैं मनीष नेक्स्ट भाई, मैच में। मनीष भाई, एक मिनट रुक जाओ यार, उनको बोलने दो, एक एक करके बोलते हैं। ठीक आप है, 1 मिनट ठीक है, वेट ठीक है, करो अब, ठीक है? चलिए बोलिए। नहीं होती है, क्योंकि ऐसा ठीक है। है विराट कोहली सोच के आए मुझे सेंचुरी मारनी है, अगले बॉल में छक्का मारना है। सामने जो बॉलर है वो क्या सोचता है कि मुझे इसे आउट करना है। आपको ये समझना जरूरी है। पहली बात, ट्रेडिंग में कितने लोग पैसा बनाते हैं? डू यू नो द स्टैटिस्टिक्स? एनुअल बेसिस में कितने लोग प्रॉफिटेबल होते हैं? चलिए आप आंसर करिए, ट्विटर छोड़ के। हाँ, ट्विटर में कोई खोता नहीं है पैसा। निखिल कामत जो जीरोधा रन करता है, जिसके पास 1/3 मार्केट शेयर है, कुछ महीने पहले उसने बताया था कि अबाउट 1% और सो मेक लेस देन रिटर्न, आई मीन द रिटर्न आर इक्विवेलेंट टू एन एफडी। अगर आप पिछले 100 साल का इतिहास उठा के डेटा देखेंगे तो नॉट मोर देन 2-3% मेक मनी ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस, 97% लूज मनी। तो क्या इसका ये मतलब होता है कि मैं ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। शायद आप वो 2-3% में हो सकते हैं, शायद आप वो 97 में भी हो सकते हो। जहां से उम्मीद शुरू होती है वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। ये व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह नहीं है, बेच दिया दिन बहुत अच्छा जाए, ऑप्टिमिज्म। इस बाजार में ऑप्टिमिज्म नहीं चलता है। परसों देखा क्या हुआ? जी सर। क्या हुआ? 15,630, 15,360, 15,580। आप उम्मीद की बात बोलते हैं ना? किसी को पता था ये होगा? घटना घटने के बाद सबको पता है। घटना घटने के बाद ट्विटर में सबको पता है ये होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग इज नॉट इन हाइंडसाइट, ट्रेडिंग इज इन लाइव मार्केट। अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे कि जो है आप सिर्फ जाके विक्टर नीडरहॉफर का इतिहास जांच लीजिए, जो मैं काफी बार कह चुका हूं। मेरा ये कहना नहीं है कि कोई नहीं बनाता है। इंट्राडे में भी लोग पैसे बनाते हैं, ओवरनाइट में भी पैसे बनाते हैं, पोजिशनल में भी पैसे बनाते हैं, ऑप्शन में भी पैसे बनाते हैं। बट द रेशियो इज 100 में से 2 बनाता है, 98 होता है। और जो दो बनाता है वो 98 का पैसा लेके जाता है। अब बात ये भी नहीं है कि आपको अगर बड़ा पैसा है, अगर आज मान लो आप 5 लाख रुपए से काम कर रहे हो, कल आपका 1 करोड़ हो गया, मेरा दावे से गारंटी है आप जो 5 लाख रुपए में रिटर्न बना रहे थे, 1 करोड़ में उसका आधा भी नहीं रिटर्न बना पाओगे। क्योंकि ये मत भूलना 5-10 लाख को 15 डबल करना या 50-60% ऊपर करना अच्छा है। आप करिए, 1 करोड़ डालिए, देखिए मार्केट की मूवमेंट, फिर आप 1 करोड़ निकालिए। 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपया होता है। और ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना, साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, पहले उनको ये तो समझ में आए कि एंट्री रूल क्या है। उसको एंट्री रूल पता नहीं। आज हम किसी का ट्वीट पढ़े थे, 70% साइकोलॉजी, 80% साइकोलॉजी। अरे वाह, तुमको सब मालूम है क्या है। यू डोंट नो हाउ टू एंटर अ ट्रेड। आपको ये नहीं पता है कि मेरा रिस्क क्या है। इस धंधे के सिर्फ 2 गुरु मंत्र है। आप जितनी जल्दी समझ गए उतना लंबा आप टिकोगे। पहली बात यह है कि ट्रेड लेना, और दूसरी बात यह है कि ट्रेड लेने से पहले ये जानिए कि मेरा नुकसान कितना है और वो कैपिटल का कितना % खाएगा। अगर आपको आपका लॉस मालूम है तो आप टिक पाओगे।
प्रॉब्लम क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड, माय प्रॉफिट टारगेट इज 1:3। अरे वाह, तुमने पहले ही ये कर लिया, बाजार को ये नहीं और पड़ी। फिर बुक भी करते सर, फिर बुक भी कर लेते 10 पॉइंट ऊपर हाँ, जाने के और बाद। वही वही चीज आशुतोष क्या होती है, 100 पॉइंट ऊपर जाती है। फिर वो ज्ञान देंगे। और फिर उसमें भी ट्वीट, हाँ उसमें भी बोल देंगे कि हाँ देखो ऊपर भी गया, मैंने बुक किया लेकिन ऊपर तो मैंने गया। बोला था ना आपको, एनालिसिस मैंने वाज बोला राइट। था ना हाँ आपको कि ऊपर जाएगा। हाँ हाँ, एनालिसिस एकदम सही था। करेक्ट। तो कौन सी चीज कितनी ऊपर जाएगी मनीष भाई, कौन सी चीज कितनी नीचे जाएगी, किसी को नहीं पता है। घटना घटने के बाद सब एक्सपर्ट लेके आ जाते, अपना डंडा लेके आते, एवरेज लेके आते, खींच यहाँ से लकीर, खींच वहां से लकीर, और बताते हैं। सब बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला बनने की, करते कि नहीं करते? आपको भी बनना होगा, मुझे तो बनना है। हाँ मनीष जी, बनना है कि नहीं बनना है? मैं माइक ऑन कर दूं सर? हाँ हाँ जी सर। भाई, ऐसा है, अगर राकेश भैया एक ट्रेड लेते हैं, वो 20 रुपया निफ्टी ऊपर गया नहीं बेचते हैं, उनका स्टॉप लॉस ही 200-250 रुपया होता है। वो 1000 पॉइंट खड़े रहते हैं, 2000 पॉइंट खड़े रहते हैं। उधर जो पहले बात हो रही जी थी सर। ना, लेटिंग योर प्रॉफिट रन, कटिंग योर लॉसेस, उसका गुरु मंत्र ये है, कौन सा ट्रेड कितना ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता है। हमने भी अभी निफ्टी शॉर्ट की थी 16,458 में। क्या मुझे मालूम था कि मैं 1000 पॉइंट नीचे काटूंगा, 976 पॉइंट नीचे काटूंगा? नहीं। अगर मैं कहता हूँ मुझे मालूम था, तो मैं घर बार बेच के एक ही ट्रेड करता, एक ही ट्रेड में पैसा बनाता, और ट्विटर में स्क्रीनशॉट डालता और अपनी छाती ठोकता। तो मनीष भाई, आई थिंक दिस आंसर्स योर क्वेश्चन यार, मतलब आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, आप देख लो यार बस। सर मैं लास्ट में कुछ मैं कंप्लीट करूं कन्वर्सेशन में, नहीं कुछ यार बोलूं सर? आप नहीं तो नहीं बोलते ही सर, जा अब रहे हो आप यार सर। किसकी हाँ बात? नहीं आप नहीं सर, इंट्रोस्पेक्शन करो, आप इंट्रोस्पेक्शन करो, कल आपसे बात नहीं नहीं करेंगे सर, दोबारा। मैं एक्चुअली जस्टिफिक जो आंसर मतलब जो अरे क्वेश्चन हम था लोग वो एक्चुअली। सर हम लोग को जस्टिफिकेशन चाहिए नहीं, आपको खुद को जस्टिफाई करना नहीं बिल्कुल। नहीं होगा, हमको बता के कुछ होगा नहीं। सर मैं एक लाइन बोलता हूँ बस। सर ने बात कही कि 2% 3% का डाटा है ट्रेडिंग में, मतलब जो नितिन कामत ने सर ने जो शेयर किया है। बट सर ये तो हर बिजनेस में है ना, 3% ही लोग पैसा बनाते हैं, 97% लोग तो सर्वाइव ही कर पाते हैं बिल्कुल, या सर्वाइव भी नहीं कर जब पाते। आपको ये ये आंसर तो कोई मालूम भी है, बिजनेस हो। तो फिर देन व्हाई दीस हाँ हाँ, क्वेश्चंस? नहीं बट सर मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पे कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि मल्टीपल टाइम्स वो सब चीजें, बट एक अगेन मेरा वही क्वेश्चन है कि बिलीफ सिस्टम तो हो सकता है ना देयर कि इज चलो यार नो सच ट्रेडिंग थिंग में। एज मनीष भाई बिलीफ। अब रोक रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, लेट्स मूव ऑन टू या अनदर आई थिंक थिंग इट नाउ। मेक्स सेंस ठीक है आशुतोष। या चलिए। डीजे या थैंक्स किरित भाई, डीजे कारा प्लीज यार गो अहेड। Yeah, I was just wanted to add some comments to या Manish's questions, but if we are closing this topic, then I don't have anything to say. No, no, नहीं DJ, मींस we'd you love to can take add your या feedback. So Manish, you know why this Nifty option selling strategy became so popular? I'll go back to the 20s. Some genius figured out that you can make money by buying strong stocks when they dip to the 20-day moving average. And soon it became very popular, and the market has a way of making every popular winning strategy a losing strategy. Now you go back a couple of years, Nifty wasn't that volatile, and then this weekly expiry came in, and a lot of the early adapters of this Nifty weekly option selling strategy became very successful. Now the market has adjusted, and it's become volatile enough to make sure that 98% of these Nifty option sellers end up making losses. And that is what is happening. And you have to be realized when you're selling Nifty options and all, you are competing with AI algorithms and all. IBM's artificial intelligence chess algorithm can beat the world champion in chess. So you're actually competing against that level of intelligence. And it's not uh, possible to make money with any popular strategy. Okay, very few people will make money with any popular strategy. आप ट्राई कर लो, आप 20-day मूविंग एवरेज पे बाई करो स्टॉक्स को, you will not make money using that. So you have to figure out some unique way
that's very unique to you. You can probably mix a couple of strategy, give weightages to a couple of strategies, and come out with your own unique combination. And I'm telling you, this Nifty options strategy will also be successful when you do it very differently and uniquely from what everybody else is doing. Until you don't do that, and in fact, that's true for any strategy. Your strategy has to be very unique and very different from everybody else. And that's the only way to make money in this market. If you do what others are doing, and I mean, watching YouTube and all is good to gather knowledge, but don't use that knowledge to trade. Use that knowledge to develop your own strategy, which should be a khichdi of a lot of other stuff. So yeah, that's all I had to say, and wish you the best with your trading career. Yeah, agree. So we'll just summarize this. Basically, majority can never make money. The reason being, if majority makes money, then who loses money? There will always be, means it's a equal transfer of capital. Someone makes money, someone loses money. So if majority makes money, then who is gonna lose that money? So always, take it into that way. If everyone is trading a same strategy, then that strategy can never make money, because if everyone makes money, then there is no way that strategy works. So let's move on to different question, and we'll wind this up in max by 11:30. We don't want to extend this to like 2-3 hours. That doesn't make any sense. Let's make this crisp and clear, and like just there is no need to extend this beyond the point. Let's take last few questions. GDS, Yeah, stock yeah. trader. This is Yeah, GDS. Yeah, yeah. My question is for किरित सर. अभी बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनको सुन के. मेरा क्वेश्चन है, जैसे ये बहुत सीनियर ट्रेडर है, एक आकांक्षा लवली करके, उनके रोज ही वो 10-10 लाख रुपए का प्रॉफिट डालते हैं. sir. Sir, I'll just stop you here. ये सब please don't questions या name ये सब topic people. पे we won't be able We to are talk. not Yeah. here to name or shame or give fame to anyone. So I would request you not to name ओके any ओके, trader. सॉरी फॉर दैट. अगर किसी का Yeah, we नाम भी will ना not लें, discuss any बट other ये traders here. ये कैसे करते हैं इतना बड़ा प्रॉफिट? No, we don't know. We will not Sir, discuss आप any other उनकी traders here. You आप can उनको ask DM them करिए, directly. उनका टेलीग्राम में चैनल है. This Yeah, platform is not to we discuss don't know how they. PNL screenshots. Sorry. ओके जी, थैंक Yeah, we are here for learning, and let's focus on that. यू. Like खुद को better Very करना good है, बाकी का answer. आता पता Very नहीं good हम लोग को. answer. Very good Yeah. answer. So let's move ahead to Vineet or stock trader. Yeah. Yeah, I want to say that if you look at the 20s, 30s, or 2000 or 2022, the market has been the same, the chart patterns has been the same, and the strategies has been the same. If you look at Mark Minervini, he was master trader champion in 1998, 2022, he was again the champion. So that proves that the market has been the same throughout the years, right, from 200 years or so. But we have to identify, and we have to have that knowledge to identify that these what the chart patterns are working, and how can we make money. So I tend to disagree with some of the participants that market are evolving and changing. Market was the same, and they will be the same in next 50 years or so. And the biggest examples has been Mark Minervini, who trade only cash side, long side. If he was champion in 1998, and again he was champion in 2022. So if you follow his Twitter, Vineet, I'll guess answer your question, Vinit. Okay, yeah, Kirit sir. Yeah. Sorry, Ashutosh, if you want to go ahead, then I'll answer. No, yeah, you can go ahead. I'll take that later. The biggest problem is the greatest trader on Wall Street, Jesse Livermore, says human nature never changes. Okay? The markets, as you are saying, are the same. But the question is, I have a question for you. If you have a strategy, and let's say the strategy delivers 9 losing trades in a row, will you still continue with the strategy? विनीत जी आपके लिए क्वेश्चन है. I'm strategy. If you are trading with the strategy, that means there are two things: either the strategy is wrong or the market is wrong. नहीं. You just made a statement saying markets never change. Correct me. Yeah, market has never changed. That's what Minervini says.
And you Yes, also mentioned Minervini won the US Trading Championship in 98. Which other 2 years you mentioned? 98 and 2022. He was the champion for 21. The reserve declared in 22. No, which 2 years? 21 and 22. Correct? No, 1998 and 22. 1998 and 22. So my second Yeah. question is, if the market doesn't change, why didn't Minervini win between 99 and 2020? Because the way he trades on those patterns were not there in between. Yeah, so That's what which I'm. means, so that's exactly what my point is. Na? Markets are dynamic. They keep changing. So I asked you a question कि अगर आप एक समझो आप एक रूल फॉलो कर रहे हो जो रिचर्ड डेनिस फॉलो करता था, buy about 20 days high, sell below 20-day low. Now that strategy following Dennis was the greatest trader in mid 80s. He turned $1,200 to $400 million यही strategy को लेके. But the strategy had a win rate of 27%. तो सिंपल बात में ये है कि 27 ट्रेड सही जाते थे, 63 ट्रेड गलत जाते थे. सर आप अगर मैं आज यहाँ एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना, अगर 5 गलत ट्रेड जाएंगे ना, 80% लोग मुझे ट्रोल करेंगे, गाली देंगे. The problem is that your question is not wrong. The problem is कि it is, see, Ed Sikota says everybody gets what they want from the market. Some want losses, so they end up losing. Some want Twitter followers. Some want adrenaline rush. Conviction होता ही नहीं है. 4 गलत ट्रेड गए, बोले वो किरेट फालतू बोलता है, कुछ भी बात करता है, वो चीज चलती नहीं है. Then you jump strategies. You stick to a strategy for 6 months. Then you come and tell me what works, what doesn't work. And sir, एक और बात बताऊंगा. नीडर ऑफर साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं. Nobody is going to disclose a secret for the cost of a book. Minervini का VCP, I am not saying Minervini is not a good trader. He's a super fantastic trader. I've had the occasion of speaking to him on 3 occasions. उसका track record is impeccable. But why will he come and openly share it? And अगर मान लो वो share भी कर लेगा, does one have the appetite to handle when the system doesn't work? So you have to adapt a system that suits your personality. राकेश भैया भी यही बात कहते हैं, you can never ever get rich at the cost of somebody else's knowledge. राकेश बोलेगा मैंने निफ्टी बाय की है, वो बोलेगा 300 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है. आपका 30 पॉइंट नीचे आएगा, आप डर के मारे आप वो निफ्टी स्क्वायर ऑफ कर दोगे, वो 300 पॉइंट नीचे खड़ा रहेगा. इफ ही इज लकी ना, फिर लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. निफ्टी 1500 पॉइंट देके जाएगी. आई नो सो मेनी सिस्टम जो साल का 1000 पॉइंट नहीं देते निफ्टी में, वो ट्विटर में 5-7 हजार डालते हो, बात छोड़ दो. So yeah, let's move ahead from this topic. Means it's what to say. This question doesn't even make sense, Vineet. Let's just move ahead. Stock trader or Balu 4L or क्या है? Akshay Kumaria. Anyone? Hey, hi, all. Can someone throw focus on how long this FII selling? This has been a it's like continuous selling, right? What could be how long this domestic? Sir, that's a $1 million this? question. So that's anybody's guess. No one knows that. Yeah, that's a $1 million question. Probably a $1 billion question. And the smart money is also selling. Even they don't know how long they are going to sell. Maybe Do they you seriously think these? Yeah, recently there are some stories evolved, right? The specialty chemicals and all, right? Do you seriously think there is a threat to this? There is a China Plus One story, and many stories Sir, have it's been built. Sir, all these stories have already been broken or the collapsed. Like in all these China Plus One and all these stories are ended. Yeah, बिल्कुल, I agree with ठीक है, chemical prices are down 40-50%, commodities are down 40-50% across the board. Everything is down 40-50% in the last 2 months. So if you are still banking on that, then it's a problem. Also remember, all these companies have planned huge capex. मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने investment और factory पे अभी नया investment किया है, and अभी interest rates बढ़ रहा है and prices घट रहा है उनके commodity का. उन्होंने प्लान किया था कि प्राइसेस बढ़ेगा या सस्टेन होगा, बट उल्टा ही हो रहा है, प्लस इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहा है.
सो दैट्स अ डबल प्रॉब्लम फॉर देम, डबल वैमी बोलते हैं कि अब इंटरेस्ट रेट्स भी ज़्यादा देना होगा एंड प्राइसेस भी कम मिलेगा कमोडिटी का, और सप्लाई भी बढ़ने वाला है आगे जाके. सो गुड लक टू दोज कंपनीज नाउ. सर थोड़ा पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो कंपनी के ऊपर. थोड़ा सा आप बैकेट में जाके एक बार डू योर लिटिल बिट ऑफ, आई वुड से, ओन रिसर्च. आप थोड़ा सा आर्टिकल्स पढ़ो, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्लोबल सिनेरियो, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द डोमेस्टिक सिनेरियो. यू विल गेट द आंसर ऑन योर ओन. यू नीड नॉट टू, हमारे बोलने से सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम बोल देंगे पॉजिटिव है जस्ट बिकॉज यू हैव अ बायस पोजीशन. प्रॉब्ली आई डोंट नो यू हैव अ पोजीशन और नॉट. assuming you have a position and one of the speaker comes and says कि यार ये तो मेरे को अच्छा लग रहा है, and the all the rest 4 or 5 speakers say कि नहीं वो खराब है, still you will go by the only one speaker who said कि ये positive है, because your view is biased. आपका आप सुनना वही चाहते हैं जो आपका दिमाग चाहता है सुनना. You will only listen to that only. So do your own research, थोड़ा सा homework करिए, पढ़ाई करिए थोड़ा सा. You will get the answers on your own. That's it. Yeah, Okay, you okay. want to add something? या आई वुड लाइक टू ऐड कि क्वेश्चन को भी थोड़ा बदल दो कि अगर होगा भी ओके वर्स्ट केस सिनेरियो, तो व्हाट विल यू डू अबाउट योर पोजीशन, ये सोचो. मार्केट, लाइक आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग, मार्केट जहां जाना होगा वहां जाएगा ही. नो वन कैन प्रिडिक्ट दैट. ओके, but what you need to think is what you will do about your position. If you don't have any position, how you will trade that market when it reaches there. And आप इन्वेस्टमेंट्स होल्ड कर रहे हो तो क्या करोगे उसका, ये सोचो. आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, व्हाट विल बी द मैक्स दैट यू आर रेडी टू लूज इफ मार्केट गोज ऑन इन सेलिंग मोड और व्हाटएवर. या so that was the discussion, basically how to look at the markets differently. कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कितना गिरेगा, एफआईआई सेलिंग कब बंद होगी. rather than thinking about it, think in a way कि मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी in that case. Yeah, wonderful point के means one should, क्या बोले यार, मतलब we are repeating this time and again. प्लीज थिंक कि आप क्या करोगे, आप कैसे उस केस में रिएक्ट करोगे, इंस्टेड ऑफ कि किधर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा. Think in terms of probabilities, think in terms of what you are gonna do. So anyways, let's take last few questions. We are already at 11:22, so 8 minutes more to go. Also we'll keep these now brief, like एकदम 1 minutes और less में एक एक question लेते हैं. या पुलकित और अक्षय, anyone? Hi, my question is on metal. Just few months back we were talking about huge metal cycle, and the, the 50% crash in some of the metals. So now, is that a good chance to again take a re-entry, or the cycle is already disturbed and I'll let K answer this question now. K, you still there? या फिर से इंटरनेट गया? Okay, fine. So विशाल भाई और किरत भाई और डीजे कारा, प्रशांत, anyone can take this question then. Anyone on metals? See, the way I see commodities playing out, right? Metals have corrected a lot, and now, assuming that we enter a recession, okay, you will see that the supply chains could further get disrupted due to the recession, and then post that the recovery cycle, you might see inflation again rising and all. So these commodity bull cycles, they usually run for a couple of years, at least 7-8 years. This is just the second year. So that makes me think that these metal prices are likely to bounce back in the long run. And personally, I would be buying commodities on bigger dips. That's just my take on this issue.
from a Cool, cool. long-term investing perspective. Right, makes sense. So, someone like me who is a momentum trader, I would not touch metals because they are falling. Okay, I'm out from metals and I don't have any positions. Maybe a couple of short positions and some clients book, but we are net negative on metals and we won't be touching it. जब जाएगा ऊपर जब prices will rise back again तब सोचेंगे. Till then it's an avoid for us. So you have two different views here. One is buy on dips and the second is sell on rallies kind of thing. So now you have to decide which one you are going to choose. Again, Yeah, both can be right, both can be wrong, no one knows. yeah, Ashutosh, mine is mainly from a long-term investing perspective. So for trading, yes, I'm not trading it either. So Right. So now you have a short term view and a long term view. So what kind of horizon you have, you can think in that terms. Like, can you keep that stock for like 5 years or more, or are you looking for a 6 months or 1 year kind of trade? Hope that answers your question. Yeah. Okay. Yeah. So yeah, Akshay, you are the last speaker for today. Hi everyone. Yeah. Hi. Actually, I am the beginner. I don't know about anything and मेरे को लगता है यहाँ पे stupidity होगी नहीं नहीं और यार, कुछ मेरे भी पास बहुत स्टुपिडिटी नहीं है. ज़्यादा आप मजे में बोलो, कोई इशू और नहीं है. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं मेरे. एक्चुअली मैं चाहता था पूछना कि अपन जब स्टार्टिंग में ट्रेड करते हैं तो यूट्यूब से अपन सीखते हैं, हम्म. टेलीग्राम चैनल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उनसे अपन सीखते हैं. तो कहाँ पे बेनिफिट रहेगा, मतलब जहाँ से अपन को प्रॉपर नॉलेज मिले, लाइक ऐसे. देखो, इस पे हम लोग ने अभी डिस्कस भी किया था. मैं बोल रहा हूँ ट्विटर पे सबके 5 साल पुराने ट्वीट्स पढ़ लो. ओके. ओके. कोई बोलेगा कि मार्क मिनरविनी के बुक्स पढ़ लो, कोई बोलेगा ट्रेड करके सीख लो, ट्रेड करो उसको, जर्नल करो एंड देन उस पे ऑब्जर्व, खुद का जर्नल फिर बैठ के रीड करो कि ओके क्या हुआ, मैंने क्या मिस्टेक्स किया, मैंने क्या सही किया. मार्केट्स को ऑब्जर्व करो, नोट्स बनाओ कि ओके कैसे मार्केट्स परफॉर्म करता है. फिर अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज या स्टाइल्स को देखो. कोई मार्केट प्रोफाइल है, पॉइंट एंड फिगर है, कैंडल स्टिक्स है. सो स्टडी ऑल दीज एंड नैरो डाउन ऑन समथिंग. ओके. देन ओके. ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, लाइक एक एक करके जो समझ में आ रहा है वो पढ़ो एंड उस पर फिर और रिसर्च करो. दिस इज वन थिंग. एंड द लास्ट पॉइंट इज बेसिकली ज़्यादा पैसा मत नुकसान करना. ओके. ओके. ठीक है. थैंक यू. अक्षय भाई सुनो ना, आप अगर हाँ. YouTube वीडियोस देख रहे हो ना, हाँ जी. तो YouTube पे स्टैटिस्टिक्स पे वीडियोस खोजो. 10th सॉरी. स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स ओके. 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 आपको हेल्प करेगा. ओके. थैंक यू प्रशांत सर. चलो यार, hope that answers your question. We have 2 minutes more. So closing remarks from everyone. Vishal, you go ahead. Let's start from this order. No, Ashu, just I would like to say thank you everyone for patiently listening to all the speakers, and thanks for your questions, because all your questions are valid and definitely informative for everyone. That's it. Yeah. Thank you. Yeah, thanks everyone. Case on call. Prashant, you go ahead. अरे इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना है भाई, क्लोजिंग रिमार्क्स और इतना अरे 6 बोलना पॉइंट पड़ता है. है यार, क्या बोले, लोग ऑफेंड हो जाते हैं. चलो, एनीथिंग वुड यू लाइक टू ऐड? नहीं, बहुत ज्ञान हो गया. चलो यार, कूल. कृत सर, आप बताओ. Nothing much. I say, I would just say, plan your trade, trade your plan, know what you end up losing before you take a trade. That's it. Short Thanks, and thanks, crisp. Ashu. Yeah, thanks. Yeah, DJ Kara. no, nothing to add. Hope you all have a profitable week ahead. That's it. All the best. Hi, yeah, you got some good wishes now. So yeah, have a profitable week ahead. K, if you are back from call, yeah. Yeah, nothing much to add. Thank you all for being a good audience and bus keep on participating. हाँ, बढ़िया था. Let's do this again another day. Probably next week, I guess. Right? Like we. Joining, Yeah. sir. Have a great weekend, everyone. Yeah. Okay. Bye Yeah. bye.
Yeah, bye bye Thanks, guys. everyone. Good night. Party hard. Yeah, party hard. Have a great weekend. Bye bye. Yeah.